Good morning, all of you. I'm Poonam Raghuvanshi, clinical SAS programmer and SAS trainer. इन केस आप ग्लोबल SAS सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज मैं यहाँ पे प्रेप गाइड के सारे ही चैप्टर स्टेप बाय स्टेप कवर कर रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक है प्रेप गाइड का थर्ड चैप्टर। चलिए। Is how long do live reps remain in effect? First option, until the leave name statement is changed, until the leave name statement is cancelled, until the SAS session end, and all of the above. So my correct answer is the all of the above. Let's see one by one. Until the live name statement is changed, अगर आप live name statement आपने change नहीं किया है तो वो आप सेम लाइब्रेरी आपकी इफेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट अंटिल द स्टेटमेंट लिव नेम स्टेटमेंट इज कैंसिल, अगर आपने वो स्टेटमेंट कैंसिल नहीं किया है या सेशन आपने क्लोज नहीं किया है तो आपका जो आपने लाइब्रेरी क्रिएट की है वो आपकी इफेक्टिव रहेगी। यहाँ पे दे आर सेइंग कि लिव नेम स्टेटमेंट जो भी है, लिव नेम स्टेटमेंट आपने चेंज नहीं किया, लिव नेम आप स्टेटमेंट आपने कैंसिल भी नहीं किया और आपका सेशन आपने एंड भी नहीं किया। आंसर इज डी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements are true? When using the default engine, you do not have to specify the livref in the live name statement. So, मैं इसके लिए SAS स्टूडियो ओपन कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बोला, लिव नेम मेरा ग्लोबल स्टेटमेंट है। अ, तो लिव नेम स्टेटमेंट मैंने लिखा, उसके बाद लिवरेफ लिखते हैं, जो कि मेरा लाइब्रेरी नेम है। फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग द लाइब्रेरी नेम एज़ एबीसी एंड इंजन। इंजन इंजन is my base. So I'm writing the base and path. So this is my live name statement, and this is my livref, and this one is my engine. And here I have to provide the path of library. And live name, ABC, and path. Here I'm using the default engine. So both the statement are same. Here I am writing the engine name. Here I am not writing the engine name. But in both cases, like I can create the library because this is here. It is, I'm not mentioning the engine, but by default, it is considered my base engine. Let's see the option. When using the default engine. So my default engine is this, right? You do not have to specify the livref in the live name statement. So livref is this, yes. So it is my wrong. So it is like a wrong statement because we have to define the livref name, right? Second, when using the default engine, you do not have to specify the engine name in the live name statement. So this is my correct. Here I'm not defining any engine name. Third is when using the default engine, you do not have to specify the SAS library in the live name statement. So here I'm writing the library name. So again, it is my wrong statement. When using the default engine, you have to specify the livref. So I have to specify the livref. This one, ABC engine name. Engine name in default, it is considered default. So I will not write in this uh, engine name and the SAS library in the live name statement. So again, it is my wrong. So my correct answer is B. When you're using the default engine, you do not have to specify the engine name in live name statement. चलिए थर्ड देखते हैं. When you specify the engine for library, what are you specifying? So here, the file format for files that are stored in library, yes, we are providing this, specifying this.
The version of SAS that you are using, no, we are not defining that. Access of other software vendors files, no. An instruction for creating the temporary SAS file, no. So my correct answer is A. Uh, so we'll see the fourth question. Uh, which statement print a summary for all files stored in the library name area 51? So there's a this one is my library name area 51. So we want to print the summary of all files. So for that, we have written in proc contains data. So it will provide the summary of my data. Or here we are mentioning the library. So here we will you will get the all data from library on underscore all underscore. No ODS. So there's a one option, no ODS. Basically, it suppress the printing of the detailed information about each file when you are specifying underscore all underscore. Let's see. So for example, I have these data set in my work library. So for example, here we will check. I'm running one by one. Let's see. There is error. Yeah. So this is my program, right? Mhm. So here I don't have that area 51 library. Here I have the work library. So in my work library, these data are available like A, B, C. So raw content, my library name is work dot all underscore all. So here I'm not writing the that option, no ODS. So first we will see without no ODS option. So see, I'm not getting the description detail of this data. Sorry. You can see here I'm getting the all detailed description data of this data set. Like a 1040, 1040. So यहाँ पे आप देखिए here I'm not writing this option like no DS option. So you can see if I'm writing this way, then I'm getting the detailed description of my data set name, observation, variables, and everything I'm getting this like a list of variables and attribute. If I'm writing this option, no, yes. So you can see the difference of this data. See, I'm not getting the all detailed description of this data set. So my like which statement print summary all करता क्या है prompt content it provide a summary print the summary of my data set. If I'm mentioning the library name, so I will get the all print summary of my data set which is stored in library. So यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने जो डेटा लिया है मेरे पास वर्क लाइब्रेरी में ABC डेटा है, इसका मैं मुझे समरी चाहिए। यहाँ पे मैं नो डीएस ऑप्शन नहीं यूज़ कर रही हूँ, जस्ट मैंने यही लिया है यही प्रोग्राम कॉपी किया है एंड देन हियर आई एम राइटिंग वर्क लाइब्रेरी नेम एंड अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर। यहाँ पे देखिए इन केस लाइक मैं अगर विदाउट
नोडीएस करती हूँ तो मुझे हर डेटा सेट की डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। लाइक डेटा ए का देखिए, फिर डेटा बी का लाइक टोटल ऑब्जर्वेशन एंड जो भी वेरिएबल्स हैं, इंजन है एंड देन जो भी होस्ट डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल और एट्रीब्यूट। वो मुझे जितने भी मेरी वर्क लाइब्रेरी में डेटा सेट हैं सबकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर इन केस मैं नो डीएस ऑप्शन लगाती हूँ, तब मुझे इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। तब मुझे सिर्फ़ एक इसकी समरी मिलती है, ठीक है? अब समरी मिलती है तो अभी मैं ऑप्शन देख लेती हूँ कि ऑप्शंस अपने क्या हैं। व्हिच स्टेटमेंट प्रिंट द समरी ऑफ ऑल फाइल स्टोर्ड इन लाइब्रेरी नेम एरिया 51। सो यहाँ पे एरिया 51 है, प्रॉक कंटेंट किया एरिया 51 डॉट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर एंड देन नो डीएस ऑप्शन। सो ऑल फाइल स्टोर इन डिटेल इन द हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये मेरा एरिया मतलब लाइब्रेरी नेम है ऑल लाइक मुझे डेटा प्रिंट करना है देन नो डीएस ऑप्शन है जो कि मुझे फाइल समरी सप्रेस कर रहा है। एंड देन नेक्स्ट इसका तो यस एरिया 51 लाइक यहाँ पे स्पेस है सो ये मेरी लाइब्रेरी नहीं हो सकती एंड ऐसे हम लिखते भी नहीं है, ठीक है? सो दिस इज माय रॉन्ग आंसर। प्रॉक कंटेंट डेटा 51 एंड अगेन यहाँ पे भी कोई डॉट नहीं है, जैसे हम डेटा मेंशन करते हैं तो फाइल लाइब्रेरी नेम लिखते हैं उसके बाद डॉट मेंशन करते हैं, डॉट रिप्रेजेंट दिस लाइक previous that it was my library name, after dot is my data set name. So proc content data again like अगर आप देखोगे फोर्थ ऑप्शन में एरिया 51 देन अगेन इट इज स्पेस एंड देन ऑल के बाद डॉट है सो इट इज लाइक अ एरिया एंड स्पेस एंड ऑल। सो ऐसे नहीं हम लिखते हैं, लाइब्रेरी नेम मेंशन करते हैं, लाइब्रेरी नेम के बाद अगर स्पेसिफिक डेटा सेट वी वांट टू प्रिंट देन वी हैव टू डिफाइन द डेटा सेट नेम। if we want all information so that time we have to write the underscore all underscore no ds this is option, ठीक है? यहाँ पे मुझे एक चीज़ और आपको बतानी है जो मैंने रिसेंटली देखा है जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन में पूछा गया है। मैं जस्ट यहाँ पे ये रिमूव कर रही हूँ नो डीएस ऑप्शन। देखिए मैंने रन किया व्हाट हैपेंड दे हैव गिवन वन डेटा सेट एंड दे सेड कि दे वांट टू also they have given the fill in the blanks question. They want to check the encoding of that data set. So we have to copy this encoding and then paste over there. So in case of that, if you are getting the similar data, similar question in your global certification, so you have to do proc content एंड उसके बाद आपका जो भी आपका डेटा सेट का नाम है, डेटा सेट का नाम लिखिए, वर्क डॉट जो भी लाइब्रेरी में दिया है, देन यू हैव टू मेंशन द लाइब्रेरी नेम एंड डेटा सेट नेम एंड देन उसके बाद रन। जब आपको रिजल्ट मिलेगा देन यू हैव टू चेक हियर, ओके? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पे देखोगे जो लिस्ट आती है alphabetic list of the variable and attribute. So you can see the first variable is name, second variable is sex, and that third variable age. So that my data is shorted. Now I am getting the all variable in shorted form. अगर in case मुझे shorted form में नहीं चाहिए, then I can use the varnap option. So you have to remember these 2 points, which is related to that proc content. अगर आप यहाँ पे देखोगे then first variable date and second year, so it is like a it is not shorted। जो डेटा में जिस फॉर्मेट में या जिस सीक्वेंस से वेरिएबल है उसी सीक्वेंस से डेटा आ रहा है, ये देखिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो माय करेक्ट आंसर इज ए। Which of the following program correctly reference a SAS dataset name sales analysis date that is stored in permanent SAS library? Okay, we'll see. सो डेटा सेल्स लाइब्रेरी पहले ये देखते हैं, एक डेटा है जो हम सेल्स लाइब्रेरी में सेल्स एनालिसिस का डेटा सेल्स लाइब्रेरी में सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लाइब्रेरी के रूल्स पता हो
तो वहाँ के रूल हैं कि आपकी मैक्सिमम लेंथ 8 रहती है, 8 से ज़्यादा नहीं रहती। And then it cannot start with numeric, it cannot be start with special character. So यहाँ पे numeric से start नहीं हो रहा, special character से भी start नहीं हो रहा, but इसकी length exceed हुई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so it cannot be 12. So this cannot be my option. Second, my cells is okay. Okay. And then like a my cells is library. Inside of the my cell library, I'm saving my data as a total. और मैं जो डेटा कॉपी कर रही हूँ या रेफरेंस जहाँ से डेटा ले रही हूँ, दैट इज द सेल्स 2027 लाइब्रेरी है, उसमें सेल्स एनालिसिस डेटा है। अगेन अगर आप इसकी लेंथ चेक करोगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 8 से अबव हो रहा है, तो ये भी आंसर मेरा नहीं हो सकता, इट इज रॉन्ग। अभी इन्होंने एक और प्रोग्राम किया है प्रॉक स्टेप में, प्रॉक प्रिंट डेटा सेल्स एनालिसिस, दिस इज माय लाइब्रेरी, यू कैन सी सेल्स एनालिसिस मोर देन 8 लेंथ, राइट? सो ये भी नहीं हो सकता है। प्रॉक डेटा इन्होंने किया है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है 2027 डेटा। सो एज आई टोल्ड यू, लाइक whenever you are defining your library, so you cannot start with any numeric and special character. So it is started from numeric. So it is again it is wrong. So मेरे पास चार ऑप्शन है, A B C D। अकॉर्डिंग टू मी ये चारों ही रॉन्ग है। इन केस आपको अगर कुछ इसमें लगता है कि मुझसे कुछ स्किप हुआ है या आपके हिसाब से कोई इसमें से बेटर आंसर है, सो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What type of information does the content processor create? Content of library, descriptor information for an individual SAS dataset. A and B answer and none of the above. So my correct answer is C because it's contain the library. It contains of library and descriptor information of individual SAS dataset. So my correct answer is C, A and B. Again, like seventh question, assuming you are using SAS code, okay, which one of the following statement is false? Libname statement can store with a SAS program reference the SAS library automatically when you submit the program. When you delete the libref, SAS no longer has access. False. Okay. When you delete the library, SAS no longer has access of the file in the library. The content of the library still exists on your operating system. Yes, it is correct. And libref can last from one SAS session to another. So okay, this is my wrong because whenever you are switching your that session, then library will not remain same. You can access file where created the other vendor software by submitting the yes. So my answer is C. Here my answer is C. Okay. So next eight question. What does the following statement do? So again, you can see this is my live name statement. As I told you, this is my global statement. Inside of the global live name statement, I am creating the states library, and this is my path. Okay. So define a library called state using the prop state engine. No, there's no any engine mention like a prop states. So wrong. Define the library called prop state. No, I'm not creating the library name is like a prop state using the state engine. No, it is wrong. Define the default library using the default engine. So I'm not defining here, I'm mentioning the library name. So it is not default library. Yes, like using the default engine, right? It is again wrong. Define the library. I'm defining a library called states.
So this is my library name using the using the default engine. Yes, so I'm creating the library as a states, but this is my default engine. I'm not mentioning any engine name. So this is my default. So my correct answer is 8. If you like this video or a session, please like and subscribe this channel, and any suggestion, please let me know. Thank you.